Good afternoon and a very warm welcome to the webinar on Leica FlexLine manual total stations built to last. Leica Geosystems has been revolutionizing the world of measurement and survey for nearly 200 years. Known for premium products and innovative solution development, professionals in a diverse mix of industries trust Leica Geosystems for all their geospatial needs. With precise and accurate instruments, sophisticated software, and dependable services, Leica Geosystems is a brand within Hexagon, the complete reality capture solutions provider. I'm very glad to have you all today in this webinar. And now let's start the webinar. First, I would like to invite Mr. Manoj Sharma, Director Marketing and Sales Excellence, to give a brief overview on Hexagon. Manoj, if you could please start and share your presentation. Priyanka, give me 1 second. Okay, thanks. Thanks, Priyanka. Welcome you all for today's webinar on FlexLine series of Leica Geosystem. When we know about the Leica, the first thing come in our mind is the accuracy and dependency. So that's how the Leica works, or Hexagon Geosystem works for us. Before we move to today's webinar, I'll just walk you through what exactly Hexagon do across global. As you see in the window that Hexagon is known a global leader in sensors, software, and we are working from towards the autonomous solution. We are committed to have an autonomous solution in the future. The tagline for us is empowering an autonomous future for all of us is how the Hexagon working towards. So when we talk about my apologies, there's slight slow on my. Okay, so how we are moving towards autonomous solution, how we are breaking towards that. Our core competency are theoretic capture, positioning, designing, and simulation. So how we are moving for autonomous solution, we are capturing a real world through our sensors like BLK, RTC. Then these sensors are capturing a data. Then we have software solution or our data intelligence, where we have a different software which make this physical world to digital, and when this both from physical and digital world merge together, we move to autonomous solution. So that's how we are moving toward autonomous solution. I am facing a bit trial on my laptop because my Priyanka, I think so. There's some challenge with my laptop. I'll stop sharing and then I've start again. My apologies for this delay. Priyanka, is possibility you can share slides for me if you have available with you? Yeah, sure, and share. We can see your screens are now, so it's a perfectly fine. So if it stops, then I'll share this time. Okay, let me give you one more try. If I'm able to do it, then it's okay for me to go through this. I hope you'll be able to see, but I'll try that. Your slides are moving. Yes, looks like it's moving. The core competence in action for us is that I have already talked about the reality capture, positioning, design, and simulation, location intelligence, autonomous technologies. These are the areas which Hexagon is working across.
Okay, so I'll not touch on this slide more because this is more on how the smart digital reality works for us. This is how the smart flows, our workflows are there towards how the two worlds become one reality when we talk about digital twin. Beyond the digital twin, when we brings autonomy in the solution, that we go beyond the digital twin. Hexagon at a glance, how we work. We believe in innovation because we certainly believe that innovation is required, and we are spending 10 to 12% of revenue in R&D. We believe our values is strategically vital for our customers. Stability, we believe in that our strength is consistency, proven structure for the customers, and our ECG strategy defines our future. We talk about sustainability for the world. The different industry where we are present, the vital industry we served. If you see that our solution cutting across all the industry, barring it's in air, water, earth, agriculture, mining, everywhere, our solutions are cutting edges across. So primarily, if you talk about the manufacturing, we are there in aerospace, automotive, consumer products, electronics, general manufacturing. So anything which come with a smart manufacturing, our solutions are there where we can help customer to increase their productivity. We have in energy and resources. We deal in mining, forestry, oil and gas, agriculture. We work across agriculture where I think so. Our solutions help us our farmers to save water so they can level the lands and they have a minimum water for irrigation. We work across urban and government services. We work across defense, government, public safety, and a lot of other areas we are working ourselves. And then construction, I think so. A lot of if you say in India is giving a focus on construction, so we believe in that our construction in industry, we are providing a solution which are really working for our customers in heavy construction, maybe buildings, surveillance. Additionally, for this, we are very much in education and research, engineering services, mapping, and geospatial content program. So overall, if you see we are working across all the domains. So how we are based, how we are in India, our presence in India, pan India, we have 14 offices across the cities. All the major cities are offices headquartered in Gurgaon. Regional sales office across all the major regions, northwest, east, south. And the way we are focused is that we have R&D center in Hyderabad and Pune, where we have around more than 2,000 employees working for the R&D, and they are working day and night to find out the best solution for how we can help our customer of the country to in this tough situation. So across, we have a strong team of sales, technical development, technical commercial expert to help our customer for different solutions. I'll just give you a brief of Hexagon Geosystem. When we talk about Hexagon Geosystem, it's a division of Hexagon where we talk about sensors. We have a geomatics where we talk about total station, GPS. Then we have machine control, which we are talking about paving and other things. Just to add that one of the biggest in India has worked on our paving control machine control product. We have utility mapping where we use RAS. Then we have a global content system where we can have an airborne sensor. We can fly across India and map the India. Then we have M3D and the scanners. We have the scanners and we have mobile mappers. Two things which I think the two things which I would like to share with you that Hexagon India has worked in a dam monitoring. We are running 6 dams where we are doing a structural monitoring for the dams. All the big tunnels are with our tunneling profile. More than half of the country works on our Chorus network, and we already has completed Maharashtra, Kerala, AP, Tamil Nadu, more to come, and the 50% of country is on our Chorus network. There are a few of our customers who are their major customer, but the list is huge. So overall, if you see that fusing the real and digital world where sensors and software works for the customers. I'll just walk you through a little bit on mining. We are very strong and we were working with the Coal India. We were running their mines for 24/7 and operational. We provide solution from pit to port. There are customers
We are known as a customer. We are running FMS, field management system, safety products across India. So this is a little bit about the Hexagon geosystem, Hexagon mining, and from others. So I would like thank you and welcome once again for this show. And this next 1 hour 45 minutes, we are going to discuss with you and going to talk about how the Leica geosystem is working towards really technology, how it's worked for the customer. Thank you, Marat. Thank you very much. Over to you. Nitin, over to you. Thank you, sir. Thank you for your presentation. Thank you for your guidance. Uh, so I will take you to the Leica new FlexLine series. Let me share my screen. Okay, just a minute. Okay, I hope my screen is visible to you. Yeah. Just before Nitin starts, a small request to all the delegates. If at any time you would like to ask a question, please enter it in the chat box and we'll take all the questions at the end of Nitin's presentation. Thank you. So let's start our webinar. It's for the Leica FlexLine manual photo session. It's a new generation built for the last, and it was launched in year 2018. So let's see. Uh, Everyone has that enthusiasm to what is inside the total session. जब इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब खोला जाता है there is something that helps you out to give you a better result, जिसमें मेन बोर्ड होता है, मदर बोर्ड है, ईडीएम बोर्ड है. So it's like in a complete overview we can see when you open this total station. And now we have come up with the new generation of the Leica total station. We followed with the legacy from the Leica T2 World T2 Theodolite, and now we have the Leica FlexLine total station series, manual total station series. आज का एजेंडा है वी विल सी कि हम लोग देखेंगे कि एवोल्यूशन ऑफ द टोटल स्टेशन. जैसे टोटल स्टेशन शुरुआत हुई थी लाइका विल्ड T2 से, दैट इज अ थेडोलाइट, वर्नियर थेडोलाइट. तो कैसे टोटल स्टेशन इवॉल्व हुआ है फ्रॉम नॉर्मल थेडोलाइट से लेके, वर्नियर थेडोलाइट से लेके आज की तारीख में एक हाई एंड टोटल स्टेशन, मैनुअल टोटल स्टेशन तक. Then there is a TPS family. We can see the TPS family what we have in a manual total session. आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मैनुअल टोटल सेशन के बारे में, लाइक मैनुअल टोटल सेशन के बारे में. फिर उसके बाद देखेंगे की फीचर्स 03, 07 और TS10 जो लाइका फ्लेक्सलाइन सीरीज के मॉडल्स है. देन लाइका फ्लेक्सलाइन ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखने के बाद वी विल सी व्हाट इज इनसाइड द व्हाट इज ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर. देन कंपैरिजन, तीनों मॉडल्स का कंपैरिजन और द प्रोडक्ट ओवरव्यू. कौन से टेस्ट किए जाते हैं बिफोर इट डिलीवर्स टू यू, हाउ वी टेस्टेड इन आवर लैब. जब आपके पास पहुंचता है मशीन, तो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे टेस्ट से गुजरता है. हीट टेस्ट हो गई, डस्ट टेस्ट हो गई, वाटर टेस्ट हो गई. सो इस तरह के टेस्ट हम किए जाते हैं. देन आफ्टर दैट, आफ्टर टेस्टिंग, वी विल डिलीवर टू यू. देन automatically, if you want to measure the instrument automatically, yes, we have a solution. It's an auto height. उसके बाद हम लोग देखेंगे why Leica FlexLine is a smart investment. हम लोग हमेशा देखते हैं कि we should have a good investment, अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सो हमें अच्छा रिटर्न मिलेंगे. बट अपार्ट फ्रॉम द गुड इन्वेस्टमेंट, हमें सोचना चाहिए कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में. Why Leica is a smart investment. So we'll see on the smart investment part also, and then your questions, आपके जितने भी questions है या फिर जो भी आपके doubts है आप पूछ सकते हैं. You are always welcome for any type of questions. So let's begin. Before moving ahead, let's see a small history of the Leica total station. In a year of 1921 to 1936, yes, जो स्काई स्क्रैपर्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, उस जमाने में भी थी, अभी भी स्काई स्क्रैपर्स और हाई बिल्डिंग्स बन रही है.
उसमें एक एग्जांपल था सबसे पहले यूएस की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग which was started construction in 1925 and वो ओपन हुई थी 1930 में। और वी कैन से प्राउडली इस बिल्डिंग के सर्वे के लिए वी यूज द लाइका वेल्स T2 theodolite which is 1 second angular accuracy theodolite of that time and it is an बोलते हैं ना ये लेगेसी है लाइका की T2 की। आज भी T2 डिफेंस इंस्टीट्यूट्स में T2 उन्होंने शोकेस में रखे हैं। So this is a T2 theodolite was being used for that skyscraper Empire State Building. Then in 1973 to 96, in 1975, there is Ceres Tower has been, was constructed. आज उसको Ceres Tower इसे आप Willis Tower भी कहते हैं। So this is also 108 story building और ये T2 mod, build का T2 mod से सर्वे किया गया था। इसके ऊपर डिस्टो लगाया जाता था DI11100 डिस्टोमैट जो ईडीएम का काम करता था, डिस्टेंस मेजरमेंट का काम करता था और T2 theodolites work gives you angle. So with the distomat and with the help of theodolite they will be able to calculate the coordinates. So T2 modular is being used for this. Emirates Tower, Dubai ke Emirates Tower, it started construction in 2000 and it's open in 2005. और यहाँ पे हमारा जो TPS 400 series, 700 series basically has been used over there. TPS 800 series used over there for the normal column surveying and topo surveying over there. Then Shanghai Towers, we use our FlexLine, earlier FlexLine series, that is TS020609. And now we have in 2018, we have TS03, 07 and TS10 model. We have a complete generation of total session. मतलब it starts from the basic total session से लेके automatic total session तक, 7 second instrument से लेके 0.5 second instrument तक, 2 mm accuracy instrument से लेके 0.6 mm accuracy के लिए। मतलब हर एक टोटल सेशन की रेंज है लाइका के पास और इसको हम पोजिशनिंग करते हैं मार्केट के हिसाब से। सो टुडे वी आर टॉकिंग ऑफ द मैनुअल टोटल सेशन एंड हाउ वी दिस टोटल सेशन, हम इस टोटल सेशन को कैसे पोजीशन करेंगे मार्केट के हिसाब से या फिर आपके एप्लीकेशन के हिसाब से। मतलब जिसको जिसे बेसिक मॉडल्स चाहिए, हैव सम बेसिक वर्क, सो ही गोस फॉर द TS03. सो लाइकवाइज वी हैव पोजिशनिंग दिस फ्लेक्सलाइन सीरीज. You all the surveyors, you all this from the civil background, so you know that what challenges you are facing earlier. जैसे पहले टेबल सर्वे हुआ करता था, चेन सर्वे हुआ करता था. So after that you shift it to the theodolite, then dumpy level, then distomat. So now we have a electronic total session. So electronic total session से क्या हमें फायदा हुआ है? पहले तो हम मैपिंग कर सकते हैं, टोपोग्राफिकल मैपिंग कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज मेजरमेंट कर सकते हैं, एक्यूरेसी इज आल्सो वेरी हाई. टेबल सर्वे से करते थे तो मीटर्स में एक्यूरेसी चली जाती है. नाउ वी आर वर्किंग इन mm एक्यूरेसी. ड्राइव्स एंडलेस फ्रिक्शन ड्राइव्स है इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका सर्वे फास्ट हो रहा है. वी विल सी डीप इनटू इट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड्स आल्सो. देन डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आ जाती है कि डेटा तो सेव हो गया, नाउ हमें उसे डेटा को बाहर निकालना है. सो अभी के जो टोटल सेशन लाइका फ्लेक्सलाइन gives you a very easy data export facility. You can export data in a CSV, CAD, XML format or any user definable format. Field work is carried out very fast. अब endless drives आ गए हैं, फिर उसके बाद आपका EDM board fast हो गया, measurement fast हो गया. So obviously field work you can carry out in a very fast way. So these are all things are possible with the Leica manual total session 03, 07 and TS10. Let's have a quick look. First, TS03. This is a manual total session and it is basically designed for the standard measurement. मतलब अगर मैं 03 की बात करूं एक मैनुअल टोटल सेशन की, सो इसमें स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस है, स्टैंडर्ड सर्विंग टास्क है, स्टैंडर्ड टेकआउट टास्क है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स टास्क है, टायर डिस्टेंस, एरिया कैलकुलेशन, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी इन CSV and a CAD. सो जो बेसिक रिक्वायरमेंट लगती है, दैट बेसिक रिक्वायरमेंट इज अवेलेबल इन 03. So जो सर्वे स्टार्ट कर रहा है which is in an entry level mode, he can go for the TS03. नेक्स्ट जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इसका मॉडल आता है TS07.
This is a manual. This is also manual total station for high-end measurements and layout tasks. हाई-एंड मेजरमेंट टास्क मतलब जैसे सर्विस टेकआउट तो बेसिक टास्क हो गई, उसके अलावा भी जैसे ट्रैवर्स प्रोग्राम हो गया, या फिर आर्क प्रोग्राम है, कोगो फंक्शनलिटी है, रोड वर्क्स फंक्शनलिटी है. सो इस तरह के कुछ सर्वेइंग टास्क है या फिर मेजरमेंट टास्क है विच आर बेसिकली डिजाइन फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. सो दीज एप्लीकेशंस आर अवेलेबल इन TS07. डाटा फैसिलिटी दोनों इसमें भी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटी इसमें भी है, कलर स्क्रीन टच स्क्रीन है. जैसे हाई एंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, अलाइनमेंट प्रोजेक्ट्स है, या बिल्डिंग नॉर्मल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, वहां पे आप TS07 यूज कर सकते हैं बिकॉज इट हैज एन 1 second एंगुलर एक्यूरेसी. नेक्स्ट लास्ट मॉडल इज आवर, it's in a very high end and most advanced manual total station, and it has a TS10 model. This is used for the very prestigious or high defined projects required project, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गई, टनल प्रोजेक्ट्स है, हाई राइज बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक ब्रिजेस एंड ऑल. तो वहां पे हम लोग TS10 को यूज कर सकते हैं because it is very steady, it is very rugged, and it has an onboard जो इसका सॉफ्टवेयर है, it has an 2D and 3D overview. We will go in depth in the next slide. First of all, let's see what is the key features of TS03. मतलब TS03 में ऐसा क्या है जो मैं करूँ. There are a lot of total station in the market. Chinese equipments है, there are other equipments also, but there are the key features of the basic model also. जहाँ पे हमारे बेसिक मॉडल्स में भी कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो compete कर सकते हैं, जो they are out where they are far better than any competition. सबसे पहले इसका ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर जो है Leica FlexLine, इट कम अप विद द बेसिक फंक्शनलिटी, और इसका जो व्यूज है इट इज वेरी इनिशिएटिव व्यू, और ग्राफिक्स इसके बहुत अच्छे हैं, और इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इज वेरी इजी टू व्यू. इसमें 3.5 इंच ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले आ जाता है, नो टच, सो देयर इज अ नो टच, सो यू कैन वर्क मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ कीज. फुल न्यूमेरिक कीबोर्ड है, अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड है, ABCD 1 2 3 4 यू कैन टाइप इजीली विद द न्यूमेरिक कीबोर्ड. इसमें 3 तरह के एंगुलर एक्यूरेसी अवेलेबल है, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड. अगर आपको 5 सेकंड चाहिए, 3 सेकंड चाहिए, 2 सेकंड चाहिए, यू कैन गो विद द TS03 इन अ बेसिक लेवल इंस्ट्रूमेंट. फाइन फोकस टेलीस्कोप. Fine focus telescope is a very good phenomena. It's a very good characteristic or a very good things into the Leica total station. Fine focus आपको हेल्प करता है फास्टेस्ट रीडिंग मेजरमेंट के लिए, मतलब EDM तो फास्ट तो है ही इसका, सो टेलीस्कोप भी हेल्प करता है आपकी रीडिंग को, मेजरमेंट टाइम को रिड्यूस करने में. उसके बाद Leica नोन फॉर द ऑप्टिक्स, तो इसका जो टेलीस्कोप है इट इज अ वेरी क्लियर व्यू. You can see more than 9 kilometers to the telescope, and it is very it is very rugged, and it is very clear view from the telescope. So we have fine focus in all total station in a 03, 07 and TS10. इसके साथ 500 मीटर का नॉन प्रिज्म रेंज मिल जाता है. डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए USB है, मिनी USB है, USB पेन ड्राइव स्लॉट है, RS-232 है, so you can download the data via cable also. SD कार्ड का स्लॉट है. SD कार्ड होने की वजह से आप डेटा उसमें स्टोर भी कर सकते हो और डेटा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हो. इसके अंदर जो इंटरनल मेमोरी है, यू कैन एक्सटेंड द इसकी मेमोरी बाय इंसर्टिंग द SD कार्ड, मतलब इंटरनल मेमोरी है और एक्सटर्नल SD कार्ड से आप इसकी एक्सटर्नल मेमोरी भी एक्सटेंड कर सकते हो. Leica is the first brand who introduced the Windows 7 EC7 model in all total station. सारे total station में Windows operating C7 version है. IP66 it is protected with the dust, water with the IP66. इसका एक वीडियो, बहुत अच्छा वीडियो, जो we will see in the later slides. So these are the key features of the Leica TS03 models. Then let's see of the key feature of the TS07. इसमें भी Leica FlexField सॉफ्टवेयर है, बट इसके साथ आपको मिल जाती है 3.5 इंच की कलर एंड टच स्क्रीन. फुल न्यूमेरिक कीबोर्ड इसमें भी है,
एंगुलर एक्यूरेसी स्टार्ट होती है 7 सेकंड से लेके 1 सेकंड तक, मींस यू विल हैव 7 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड एंड 1 सेकंड। इसमें भी फाइन फोकस है। और 1 सेकंड होने की वजह से मतलब जब अगर किसी को 1 सेकंड इंस्ट्रूमेंट चाहिए, सो वी हैव अ TS07 ऑप्शन एंड इट्स में भी फाइन फोकस टेलीस्कोप है। बाय डिफॉल्ट इसके साथ 500 मीटर का नॉन प्रिज्म रेंज आ जाता है। सो इफ you buy the TS07, you will have a 500 range of non-prism DR mode default. But अगर किसी को और ज्यादा रेंज चाहिए, so we have an option of R1000 model also. So R1000 मॉडल का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, which is not available in a TS03. Then data import export के लिए we have same data import export, that is mini USB, USB, RS-232 SD card, Windows EC7, IP66, and there is an additional interface is available, that is WLAN and Bluetooth. As I said, it's a Windows based Windows EC7, so इसमें Wi-Fi enabled भी आप कर सकते हो। तो फील्ड पे आप इसमें विंडोज की स्क्रीन पे आके वाईफाई एनेबल्ड करके आप इसको डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हो वाया मेल थ्रू, और यू कैन यूज द एफटीपी पुश टू पुश योर डेटा वाया वाया इंटरनेट। फिर उसके बाद मोबाइल डेटा ऑप्शन है इसमें अवेलेबल। सो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ द टू पुट द सिम कार्ड इनटू द टोटल सेशन एंड यू कैन इजीली एक्सेस इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन योर टोटल सेशन। ऑटो हाइट जो है ऑटोमेटिकली इंस्ट्रूमेंट की हाइट मेजरमेंट करने की फंक्शनलिटी इसमें ऑप्शनल है। इफ यू वांट वी कैन गिव इट टू यू, बट बाय डिफॉल्ट इसके साथ नहीं आता है। सो इट्स एन ऑप्शनल ऑटो हाइट which is available in our next model, that is TS10. It runs on the Leica Captivate and it an ability to run the third party software. What is the third party software means? जैसे कि आपने देखा अभी ओलंपिक में भी आपने देखा होगा और अभी रिसेंट कॉमनवेल्थ में भी आपने देखा होगा कि लाइका के टोटल सेशन यूज किया गया है। सो देयर इज एन ऑटोमेटिक टोटल सेशन हैज बीन यूज्ड और वो भी सेम वर्क करते हैं लाइका कैप्टिवेट सॉफ्टवेयर पे। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं एज पर दी एप्लीकेशन। जैसे जेवलिन थ्रो के लिए लाइका ने डिजाइन किया था एथलेटिक एप्लीकेशन प्रोग्राम। पाइपिंग एप्लीकेशन फॉर अंडरग्राउंड पाइपिंग, उन्होंने एक पाइप करके एप्लीकेशन डिजाइन किया था। सो दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स और दीज आर दी डिजाइन सॉफ्टवेयर कैन बी एडिशनल, इट कैन बी एडेड लेटर इनटू द लाइका कैप्टिवेट। सो लाइका कैप्टिवेट सॉफ्टवेयर होने की वजह से कल अगर कोई नए एप्लीकेशन प्रोग्राम डिजाइन किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं, दैट ऑल्सो कैन बी possibly integrated or possibly imported, uploaded into the instrument. Again, there are other third-party softwares like जो भी surveying softwares है या Android-based softwares है, that also can be used into uploaded into the Leica Captivate. You need a Leica permission that we will take care of it, and it can be integrated into the instrument. अब इसके साथ आ जाती है 5 इंच का डिस्प्ले, 5 इंच WVGA डिस्प्ले विद द कलर एंड टच स्क्रीन। अब इसमें जो WVGA स्क्रीन है दैट इज ओनली अवेलेबल इन द लाइका। WVGA स्क्रीन यू कैन इजीली सी इन ब्राइट सनलाइट एंड अंडर हार्ड कंडीशन। आप लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से कहीं से भी देखोगे यू कैन सी द स्क्रीन। आपको स्क्रीन के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं है। जैसे VGA स्क्रीन, बाकी कंप्यूटर्स की जो VGA स्क्रीन होती है, यू हैव टू स्टैंड फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। सो WVGA स्क्रीन का ये फायदा है, सी एनी हार्ड कंडीशन में या फिर हार्ड in a bright sunlight also you can easily see the screen. Touch screen, it has a very multi-layered of the touch screen, so there is no possibility that there if you use hard, so touch screen खराब होने के chances very big. It has a full numeric keyboard with the illumination. इसमें 5 सेकंड से लेके 1 सेकंड की एंगुलर एक्यूरेसी के मॉडल और वेरिएंट्स अवेलेबल है। इसमें भी फाइन फोकस टेलीस्कोप है। TS10 come up with that R500, that is a 500 non-prism mode by default, and if you want a R1000, that also can be updated or that also can be ordered. इसमें भी 4 तरीके की डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए फंक्शनलिटी है। Also it runs on a Windows EC7
IP66 इसमें भी है. So all three models having the IP66. It is having the same WLAN, Bluetooth, and mobile data option, but there is a one additional, that is auto hide. So auto hide option is available in a TS10 by default. So we will go most deeply in more. Let's see the Leica series software. उसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि 03 और 07 लाइका फ्लेक्स फील्ड पे काम करते हैं. अब इसमें आपको एडवांटेज क्या मिलता है? इट इज वेरी इजी टू यूज. ऑब्वियसली सबका यही फीडबैक आता है कि लाइका इज वेरी यूजर फ्रेंडली. इट इज वेरी इजी टू यूज. व्हाई? बिकॉज द गाइडेड वर्कफ्लो. द वर्कफ्लो जो है लाइका का, इट इज वेरी गाइडेड. You don't have to go give any commands or kind of you don't require much trainings. So एक simple workflow आप देखोगे सर्वे का, स्टेकआउट का, स्टार्ट करने का, मेजरमेंट करने का. इट इज वेरी इजी एंड इट रिक्वायर्स अ वेरी मिनिमल ऑन साइट ट्रेनिंग. ग्राफिक जो इसके है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आइकॉन्स जैसे प्रिज्म का ग्राफिक्स है या फिर मेजरमेंट्स के ग्राफिक्स है, एरिया का ग्राफिक्स है. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज वेरी नाइस टू सी. Pinpoint ADM measurement, it is used, it is in a technology, it's only for the Leica patented technology, that is pinpoint technology. Pinpoint technology मतलब जब हम लोग क्रॉस हेयर को देखते हैं, it is very useful and I think I believe it's only available in a Leica. Pinpoint technology मतलब जब हम लोग क्रॉस हेयर से किसी पॉइंट को टारगेट करते हैं और मेजर करते हैं, you have to blindly rely that it's taking the measurement of that point only. How can we sure? We do one test, that is pinpoint test. आप एक कार्डबोर्ड पे एक छोटा सा होल कर लो, अराउंड 4 mm और 5 mm का एक होल करके, you just put it at the distance of 50 meter. Then just और उसके पीछे 20 मीटर एक बोर्ड रख दो, व्हाइट बोर्ड, and target your crosshair on that particular hole. So laser will pass through that hole and will take the measurement, which is the object standing at the uh, back of that cardboard. That means जो भी आपकी लेजर है, वो लेजर पास हो रही है उस होल के थ्रू और वो टारगेट हो रही है पीछे का ऑब्जेक्ट. सो यू हैव टू सिंपली रिलाई ऑन दैट कि आपका जो क्रॉसहेयर का जो collimination है, जो आपका लाइन ऑफ साइट है, that is exactly coincide with your crosshair. Your line of sight exactly coincide with your crosshair. So that is our pinpoint technology of the Leica FlexLine series. In a TS10 we have a Leica Captivate. इसके अंदर आपको कॉम्प्रेहेंसिव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज मिल जाता है. सर्वे, स्टेकआउट, रेफरेंस लाइन, आर्क, ट्रैवर्स, सेट्स ऑफ एंगल, everything is available in a Leica TS10 model. Then it has another 3D data flow, and also you can view the data in a 2D and 3D format. Also जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो गए जो 3D मैप में आपके पास अवेलेबल है, DXF फाइल आपके पास 3D मैप में अवेलेबल है, आप उसको सीधा TS10 में इंपोर्ट कर सकते हो इन अ DXF और DWG फॉर्मेट, एंड यू कैन व्यू ऑन द स्क्रीन द डेटा इन अ 3D फॉर्मेट. बिल्डिंग का लेआउट हो गया या बिल्डिंग का पूरा 3D structure हो गया, that you can easily see into the TS10 because it has a Leica Captivate onboard software. And as I said, TS10 includes and it is able to run the third-party software and the new feature software which is coming from the Leica, जो भी Leica design करेगी या कर रही है, that also compatible with the Leica TS10. Obviously with the additional cost of the customer's requirement and the customer application, हम इसे implement कर सकते हैं TS10 में. A quick product overview. जैसे मैंने बताया, TS03 में ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले है, TS07 में QVGA डिस्प्ले है और TS10 में WVGA डिस्प्ले. Both our display are all our display is very you can see very visible. The icons are very clear, the graphics are very clear. Fine focus, R400, everything is we have discussed in this and our last 3 slides. So let's move to the next slide. Why Leica FlexLine series is best in the performance? ये जो points है,
that's only the makes the Leica is far better than the any of the competition. एक तो IP66 है, दूसरा इसकी जो इंटरनल मेमोरी है ना, वी हैव द 4 GB इंटरनल मेमोरी. We started our journey, I know, in a TPS 400 series, the data memory was only 10,000 points, which is, I think, in a 2006, it was 2004 or 6. So internal memory at 10,000 points. Now it has been extended and we have the internal memory of 4 GB. And 4 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ साथ इसके साथ एक्सटर्नल SD कार्ड मेमोरी भी सपोर्ट है अप टू 32 GB. So memory evolved in that particular phase from 2003 to 2022. और 4 GB memory में Leica gives you complete 4 GB memory. The rest, a very few memory has been used for the Leica, जैसे onboard program हो गए या फिर onboard functionality हो गई, उसके लिए minimum hardly 300 to 400 MB has been used. The rest, more than 3 GB memory has been used for the data storage. अब 3 GB memory में आपका कुछ नहीं तो आराम से 6 to 7 lakh points you can store into the internal memory of the TS FlexLine series. So data capacity बहुत high है इसमें. Then processor speed and RAM speed. It helps you for the faster data handling. जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक बड़ा डेटा है, कोई स्कैन डेटा है या फिर कोई DXF फाइल है, DWG फाइल है, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंपोर्ट करके हमें लेआउट करना है, टेकआउट करना है. सो जो प्रोसेसर स्पीड है और जो रैम स्पीड है, दिस हेल्प्स यू आउट टू फॉर दिस डेटा हैंडलिंग. तो Leica has a 1 GHz प्रोसेसर एंड 1 GB मेमोरी. जब आप कोई भी 10 MB, 10 MB का, 100 MB का, 200 MB की DXF फाइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डालोगे तो इंस्ट्रूमेंट स्लो हो जाता है. बट Leica FlexLine has a highest processor speed and RAM speed, which helps you out to faster data handling, faster data acquisition, and helps you out to faster layout and data management. So this is a USP of Leica FlexLine series. Auto height functionality, it measures the height automatically and it will give the accuracy of height at around 1 mm at a distance of 1.5 meter. So auto height functionality Leica FlexLine में, Leica total station में ही है, because Leica is always known for the invention, always known for the first, world's first in the market. So auto height Leica ने ही first निकाला है, because we thinks about the futures, we thinks about the what customer requires, and we go ahead in every steps from anyone. Reflector accuracy, this is very nice, this is very important point to know about the reflectorless accuracy. हम जब reflectorless accuracy की बात करते हैं तो उसमें लेजर पॉइंटर आ जाता है या लेजर डॉट आ जाता है. जब लेजर डॉट जब रेंज बढ़ती है, ऑब्वियसली लेजर डॉट की साइज बढ़ जाती है, राइट? सो व्हेन, as I said, the Leica laser dot is the smallest laser dot in the world. So when the laser dot increase or the range increase, the laser dot increase, and it will degrade the accuracy. Accuracy कम हो जाती है. But pinpoint टेक्नोलॉजी की वजह से Leica FlexLine की reflectorless की accuracy 500 मीटर तक 2 mm ही रहेगी. Even the laser dot size is bigger, but जो crosshair का center है, that is exactly coincide with your laser pointer center. So जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी पॉइंट को मेजर करते हैं, किसी बिल्डिंग के कॉर्नर को मेजर करते हो या एजेस को मेजर करते हो, you simply blindly rely on that you are taking the measurement of that particular point only with the accuracy of 2 mm plus 2 ppm. Our instrument does not degrade the accuracy of the reflectorless. So that is the beauty of the pinpoint technology, and which is only Leica have. यूजर डिफाइनेबल ट्रिगर की विद टू फंक्शन. अगर आप किसी अब जिसने यूजर है जो हमारे 400 सीरीज से यूजर है, दे आर वेरी मच हैप्पी विद द ट्रिगर की. जो साइड में ट्रिगर की बटन होता है, यू जस्ट टारगेट द प्रिज्म एंड जस्ट प्रेस द ट्रिगर की. सो इट डेटा मेजरमेंट इज वेरी फास्ट, पॉइंट मेजरमेंट इज वेरी फास्ट. जब हम लोग प्रिज्म को टारगेट करते हैं और जब तक हम लोग कीबोर्ड की तरफ मेजरमेंट दबाने के लिए आता है, तो देयर इज अ चांस कि प्रिज्म मैन थोड़ा हिल जाए. तो प्रिज्म मैन हिलने की वजह से आपकी रीडिंग में थोड़ा बहुत डेविएशन आ जाता है. तो ट्रिगर की विल हेल्प यू आउट टू एलिमिनेट दैट एरर. तो आप जैसे प्रिज्म को टारगेट करोगे, तुरंत ट्रिगर की दबा दोगे तो तुरंत आपके पास मेजरमेंट आ जाएगी. सो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड.
So this is the beauty of the trigger key and helps you out for the data faster data measurement. Rest, the most trusted and reliable partner of the surveyor. We don't treated our surveyor or our customer as a customer. They are our trusted and reliable partner, and they are also our partner. So जो भी है हमारे पास, जैसे लाइका क्वालिटी है ही, ब्रांड है ही, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट रेगडनेस, our service support, our sales and technical supports all over the India, which makes the Hexagon, which makes the Leica Geosystem or Leica Hexagon Geosystem is a partner for the surveyor. So these are the things which we need to keep into mind when we give the order to for the Leica FlexLine. These are the main things, that these are the USP, or we can say these are the our advanced points over the competitions. जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों FlexLine सीरीज हैव एन IP66, चाइनीज भी डाल देते हैं, IP65 है, IP67 है, बट वेदर व्हेन यू सी देयर बॉडी आपको पता चल जाता है कि यार ये तो IP67 68 लग ही नहीं रहे, क्या इन्होंने ये टेस्ट की है? बट यस, वी हैव टेस्टेड, वी टेस्ट all our equipment, our lab, and we make a certification, and these are the IP rating or IP testing has been done into lab. Let's see how we tested our total session in our Leica factory. So we projected one powerful jet, एक 12 mm के नोजल से हमने एक इंस्ट्रूमेंट को पानी से फोर्सले पानी डाला है इस पे. The instrument bounced securely and the jet blasted. After that, we disassemble everything and see there are no water drops, there is no nothing is in a मतलब पानी का कोई नामो निशान नहीं. Then उसके बाद आती है dust protection की बारी. Yes, we have no ingress of the dust, the complete dust protection. So we tested up to the 8 hours in the total station. Total station has been securely then we blasted with the dust. You can see in a slow motion कितनी भारी मात्रा से डस्ट इसके ऊपर डाला गया है. So keep it for a long, almost more than 8 hours in the dust, and then disassemble. There is no stresses of the dust inside the total station. So this is why the Leica IP66, Leica FlexLine से IP66, और इसलिए Leica के ये टोटल स्टेशन माइनिंग में यूज होते हैं, अंडरग्राउंड यूज होते हैं, ओपन कास्ट माइन में यूज होते हैं, जैसे कि हार्श कंडीशन में यूज करते हैं. So that's why this is not, always good is buying the best instrument, but right is buying the instrument that will last a lifetime. Leica के आज भी 1800 2000 सीरीज 1200 सीरीज आज भी काम कर रहे हैं. So that is we stays with you for the lifetime, which lasts for the lifetime. Other further tests like जैसे ड्रॉप टेस्ट हो गई, अगर मैं इसको 1 मीटर या 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे इसको अगर फेंक देता हूं, सो कंटेनर इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये इंस्ट्रूमेंट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे. सो कंटेनर, इसके अंदर का जो उसकी पैकिंग है, दैट इज डिजाइन सो परफेक्टली, इंस्ट्रूमेंट सिक्योरली रहता है कंटेनर के अंदर. उसके बाद लॉन्ग टर्म टेस्ट जैसे टेम्परेचर टेस्ट हो गई, हीट टेस्ट हो गई, प्रेशर टेस्ट हो गई. वी हैव अ लैब, we tested in an open field also, we tested in a heat chamber, in a pressure chamber also for the long term testing. एक होता है नेक्स्ट होता है लॉन्ग टर्म टेस्ट इन आर्कटिक वर्जन जो होते हैं, जैसे आपने डेटा शीट में देखा होगा, टोटल स्टेशन की ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -20 to 50 डिग्री. Now there are some regions like Arctic region like Mont Blanc, और हमारे यहाँ पे जैसे ग्लेशियर्स रीजन्स है, लद्दाख या फिर
हिमाचल और माउंट एवरेस्ट, वो तो वहां पे भी सर्वे किया जाता है। तो वहां पे सर्वे के लिए आपके इंस्ट्रूमेंट भी उस तरीके से डिजाइन करने चाहिए। सो वी हैव एन लाइक अ टीएस फ्लेक्सलाइन सीरीज विच आर वर्किंग अंडर द रेंज ऑफ -30 टू +60 डिग्री टेम्परेचर। तो इस तरह के रीजन में भी काम करने के लिए वी प्रोवाइड द स्पेशली डिजाइन टोटल सेशन, एंड दिस टोटल सेशन आर अवेलेबल इन अ वेरिएंट्स ऑफ TS10 एंड TS07। अब आ जाते हैं हमारे ऑटो हाइट फंक्शनैलिटी के लिए। पहले तो जब मुझे इंस्ट्रूमेंट की हाइट मेजर करनी है, मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया, सेंटर लेवल कर दिया, फिर मैंने टेप निकाल ली, प्रिज्म मैन को बोला भाई 1 मिनट रुक जा, टेप पकड़ लेना, आई नीड टू चेक द हाइट। हाइट चेक कर ली, मेजर कर ली, फिर उसके बाद हाइट एंटर कर ली, फिर उसके बाद प्रिज्म मैन को बोला अब तू प्रिज्म लेके चला जा, आई हैव टू स्टार्ट द सर्वे। इस तरह से काम करना है या फिर आपको सिंपली यूज करना है ऑटो हाइट। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस आपका टाइम भी बहुत जाता है, आपका प्रिज्म मैन बिजी रह जाता है, इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइट मेजरमेंट में एरर आ जाता है, इट्स मोर देन 5 mm एरर व्हाइल टेकिंग द मेजरमेंट मैन्युअली विद द टेप। तो इसको ओवरकम किया गया है लाइका के वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटो हाइट फीचर्स में, विच इज अवेलेबल इन 07 एंड TS10। कन्वेंशनल मेथड, लाइक जैसे टेप से मैंने मेथड कर लिया, मेजरमेंट कर ली, ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ इंक्लिनेशन, तो आपकी टेप हमेशा टिल्टिंग रहेगी। या फिर आप अपनाना चाहते हो ऑटो हाइट मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट से सिंपल एक लेजर जाएगी इन डाउन टाइम और आपको ऑटो हाइट मेजर करके दे देती इन विद अ सिंपल एक सिंगल बटन प्रेस से। So that is our auto height features, which is invented by the Leica and is the world's first auto station with the auto height. Further facts about the auto height, जैसे हम लोग देखेंगे कि ऑटो हाइट मेजर करने के लिए कोई अलग से लेजर लेजर इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर बिठाया नहीं है। सेम लेजर जो आपको सेंटरिंग लेवलिंग के लिए काम आता है, वी यूज द सेम लेजर फॉर दी टू मेजर दी ऑटो हाइट। इसमें हम लोगों ने यूज किया गया है ईडीएम टेक्नोलॉजी, दैट इज सेम टेक्नोलॉजी बेस्ड इन डिस्टोमैट, दैट इज डिस्टोमीटर आप जो यूज करते हो डिस्टेंस नापने के लिए। द सेम टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन ऑटो हाइट फंक्शनैलिटी, एंड इट इज अ सिंपल टच बटन। एक सिंपल एक बटन प्रेस से विद इन 2 सेकंड और विद इन 1 सेकंड और 2 सेकंड यू विल एबल टू मेजर द हाइट एंड इट यू विल एबल टू स्टार्ट योर वर्क। एक्यूरेसी इज इन mm, ऑब्वियसली जब आप किसी कोई भी मेजरमेंट लेते हो, हाइट मेजरमेंट लेते हो या डिस्टेंस मेजरमेंट लेते हो, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वी गिव यू एक्यूरेसी ऑफ 1 mm एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड द टाइम इज विद इन द सेकेंड्स। और आपको कोई स्पेशलाइज्ड ट्राइपॉड यूज करने की जरूरत नहीं है। लाइका का कोई भी ट्राइपॉड या जो 5/8 इंच होने जो स्क्रूज है, that also common tripod you can use. You can easily mount the total station on that particular tripod, and auto height functionality can be used on that any type of tripod. मेजरमेंट रेंज, यस, 0.7 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक की इसकी मेजरमेंट रेंज है, एंड द एक्यूरेसी जैसे मैंने आपको कहा 1 mm एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। कन्वेंशनल मेथड से अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की हाइट मेजर करने जाऊंगा, इट विल टेक मोर देन 30 सेकेंड्स, बट अगर मैं ऑटो हाइट से करने जाऊंगा विद इन द सेकेंड, इट जस्ट प्रेस अ बटन, एक बटन दबाने की देरी है, so you will have the auto height automatically measure, instrument height automatically measure into the instrument. Now we have only closing to the flex line. Why the flex line is a smart investment? Everyone is want to do a good investment. Obviously अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आपके रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, बट जब आपकी इन्वेस्टमेंट स्मार्ट है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे भी मिलेंगे और स्मार्ट भी मिलेंगे। व्हाट आर दी स्मार्ट रिटर्न्स दैट वी विल लुक अपॉन। सबसे पहले, यस, लाइक का स्पीड, टोटल सेशन का स्पीड, वी हैव अ फास्टेस्ट वर्किंग स्पीड। व्हाई दिस इज द फास्टेस्ट स्पीड?
लाइका टोटल स्टेशन को फास्ट क्यों बनाया? कौन बनाते हैं मेजरमेंट के लिए? तो उसके एंडलेस ड्राइव्स, जो उसके फ्रिक्शन ड्राइव्स है, देयर इज नो क्लैंपिंग इन अ ड्राइव्स, देयर इज अ ट्रिगर की बटन, drives, horizontal drives and vertical drives available on right side and left side. दोनों ड्राइव्स एक ही साइड पे अवेलेबल नहीं है, हॉरिजॉन्टल ड्राइव्स राइट साइड पे है, वर्टिकल ड्राइव्स लेफ्ट साइड पे है, सो दैट यू कैन वर्क विद योर बोथ हैंड्स। और इन सब चीजों को ध्यान में रख के लाइका ने जो टोटल सेशन बनाया है, इसकी वजह से इट मेक्स द इंस्ट्रूमेंट फास्टर, इट हेल्प्स यू टू बूस्ट योर स्पीड। एंड ऑल्सो जो उसका ऑनबोर्ड प्रोग्राम, ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर है, जो हम लोगों ने बात की, लाइका फ्लेक्स फील्ड एंड लाइका कैप्टिवेट, and it is very easy to use, very user friendly, and this makes the works more faster. So these are the things which makes your instrument, or which makes the FlexLine series more faster, and it helps you for the speed. So first investment, with the smart FlexLine investment, you will get one return, that is speed. First return is your speed. Second return is your trouble free working. जब भी हम लोग काम करते हैं साइट पे, हम चाहते हैं कि हमें कोई ट्रबल ना हो, हमारा इंस्ट्रूमेंट बंद ना पड़ जाए, या इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो, या कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दैट वी कॉल एज अ डाउन टाइम. So Leica has a very minimal downtime. Obviously, when you are using this instrument in a very challenging environmental condition, open condition or drastic condition, obviously there is a small time. But Leica having a very minimal downtime, and which helps you out to increase the productivity. And downtime होने के बाद भी we have a specialized servicing network all over the India, all over the globe, which helps you out to resolve a minimal, छोटे से छोटे प्रोडक्ट प्रॉब्लम से लेके बड़े से बड़े प्रोडक्ट प्रॉब्लम का सारा सोल्यूशन यहाँ पे सपोर्ट नेटवर्क में है. अगर इंस्ट्रूमेंट एक्सीडेंटल भी हो जाता है, so you don't need to send the instrument to the Leica. Everything is taken care by the locally. All the spares, everything is available. So this is not trouble free. You are working in a trouble free. So second retail, you will have a trouble free environment. You can work your total station under the trouble free environment. थर्ड रिटर्न आपको मिल जाती है ड्यूरेबिलिटी. यस, जब हम लोग टोटल सेशन, तो हम लोग घर के अंदर या फिर इनसाइड दी वॉल, तो इनसाइड द वॉल तो हम लोग यूज नहीं करेंगे. हम यूज करते हैं बाहर, हम लोग अंडर द स्ट्रॉन्ग सनलाइट, अंडर द हार्श कंडीशन, लाइक जहाँ पे बारिश है, जहाँ पे एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है, डस्टी कंडीशन है, मडी कंडीशन है, स्मोकी कंडीशन है, तो वहां पे हम लोग टोटल सेशन यूज करते हैं. सो इतनी कंडीशंस पे यूज करने के बाद भी, विथ योर रेगुलर सर्विसिंग, the instrument gives you the high level of accuracy after so long time. जब हम लोग 10 साल भी हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, 12 साल भी, 15 साल बाद भी हम लोग यूज कर रहे हैं. इवन द Leica TS0206 launched in 2008, still we are giving the support to that, to the total station with the spares. अभी तो 2022, मतलब more than 15 years हो गए हैं. So 15 years के बाद भी वो टोटल सेशन काम कर रहे हैं, just because it is a durable product. So if people are looking for the lifetime, or the instrument which lasts for the longer, durable product, yes, this is a smart investment. You will give a smart return as a durability. Fourth return, that is an auto height, which we have seen in this in the last slide. Obviously, it saves your time, and this this helps you out to remove the errors, and it helps you set up the process faster. अगर आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेटअप प्रोसेस फास्ट हो जाती है, ऑब्वियसली आपका आपका सर्वेइंग टाइम भी बच जाता है, जहाँ पे आप, क्योंकि स्टेशन सेटअप करने में ही ज्यादा टाइम लगता है. और अगर आप ऑटो हाइट फीचर्स की वजह से अगर आपका टाइमिंग कम हो जाता है, सो ऑब्वियसली आपका सर्विंग सर्विंग जो आपका स्पीड है, that also increases. So auto height will helps you out to save the time, and you increase the surveying speed at site. Fifth, that is more important point, that is the total cost of ownership. That is called a TCO. जब हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, कोई भी, नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंट, एनी अदर प्रोडक्ट्स और एनी अदर गुड्स, वी सी दी वी अब उसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं, हम उसकी रिलायबिलिटी देखते हैं, बट उसके साथ साथ हम उसकी कॉस्ट भी देखते हैं.
टोटल सेशन के मामले में यही है, हम लोग कॉस्ट देखते हैं जनरली। क्लाइंट स्टार्टिंग में पहले कॉस्ट देखता है, चलो ये सस्ता है, विल गो फॉर दैट द कॉस्ट। बट आफ्टर बाइंग द लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट, जब उसे ये साइट पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, डाउन टाइम फेस करता है, एरर एरर फेस करते हैं, स्पीड का इशू फेस करते हैं, so again he has to send the equipment, again he has to go for the replacement, everything. So this also uh, is also increase your cost. आप जब इंस्ट्रूमेंट बंद करते हो, आपका एक दिन का खर्चा चला जाता है, एक दिन का आपका पूरा, 2 दिन का, 3 दिन का आपका पूरा काम चला जाता है। सो दिस इज ऑल्सो योर कॉस्ट when you send the equipment to the service center frequently, send the equipment to your to that dealer frequently for the replacement, और तो उसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है, आपका सर्वे भी स्टक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका नुकसान हो जाता है। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर while placing the order. So Leica will be a minimal downtime, and it gives you a durable product, it gives you a speed, it gives you a reliability. So, and it ensures that all your investment gives you the product which stays with you lifetime. ये इस और चीजों की वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है, दिस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट फॉर 1 or 2 years or 3 years, दिस इन्वेस्टमेंट इज फॉर द लाइफ टाइम। आज भी आप लोग 10 साल बाद, 15 साल बाद भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हो। सो दैट इज ऑल्सो द एडिशनल थिंग्स, दैट इज अ कॉस्ट इज एडिशनल। सो दिस इज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, वी कॉल्ड इट एज। So you can increase the productivity by relying our 200 years of experience. We have a more 200 years of experience, and this helps you out. And this, इसको आप देख सकते हो, आप रिलाई कर सकते हो हमारे इस एक्सपीरियंस पे, so that you can increase your productivity by having your Leica FlexLine total session uh, in your surveying instrument box. And I'm really thankful for you. Thank you for your attention. And if there is any questions or any query, you can put it in the chat box. You can ask, or you can drop me a mail, or you can send me the WhatsApp on that same number. Use queries you can send on me on my WhatsApp, और आप मुझे मेल पे भी आपकी queries डाल सकते हो. So if there is anything, I will surely give my I will surely satisfy all your queries and all your questions. Thank you so much. Thank you so much, Nitin. I think we have 5 minutes and maybe we can take some questions. Some questions have come in the chat box. Yeah? Okay. So maybe I can read out that question and then you can answer them. Sure. Okay. There's this one question that's come from Nadeem. He's asking how we can define auto height on field and which model we can get auto height. Which model auto height we can get. Auto height TS07 में ऑप्शनल है। जब आपको TS07 आपको ऑर्डर करना है, you have to ask your salesperson that you need a auto height because it's in a factory fitted. So TS07 में ऑप्शनल है, but TS10 में डिफॉल्ट है। अगर आप TS10 ऑर्डर कर रहे हो, so ऑटो हाइट बाय डिफॉल्ट उसके साथ आ जाती है। There's another question by Mr. Amar Mehta. He's asking, Leica FlexLine is the only supporting onboard software. Is the only supporting onboard software for this series, but can we install Field Genius software and also can we use the same in this total station? No, the Field Genius is not compatible with the Leica FlexLine or the Leica FlexField. Field Genius is a different based software, but yes, it can be compatible with the Captivate, but not with the TS10. But in the TS13, 16, you can easily Captivate के साथ Field Genius आप install कर सकते हो, but not with the FlexField. Also, there's one question which is on which format can we export or import data, direct CSV or any other mediator extension? Any CSV format, any XML format, DXF format, you can transfer or import and export data. Also user definable, जैसे मुझे अगर किसी फॉर्मेटिंग में किसी पैरामीटर्स में मुझे CSV फॉर्मेट चाहिए, जैसे मुझे पॉइंट आईडी चाहिए, प्रिज्म की हाइट चाहिए, टाइमिंग चाहिए,
These are the user definable format also you can create into the software, and this format we can create, और इस format से भी आप data को import export कर सकते हैं. This question is TS13 or TS07, which one is better for road alignment, work related compare wise? Work related compare wise. अब both दोनों में 1 second accuracy available है. अब काम आ जाता है कि आपको मैनुअल वर्क करना है तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, बट जब आपको ऑटोमेटिक वर्क करना है TS13 इज अ गुड ऑप्शन विच हेल्प्स यू टू इंक्रीज द स्पीड, विच हेल्प्स यू टू रिमूव द ह्यूमन एरर, क्योंकि मैनुअल जब आप करते हो तो आपको आपको प्रिज्म को मैनुअली टारगेट करना पड़ता है, यू हैव टू रिलाई ऑन योर ह्यूमन आई. But when you go with the automatic total you can blindly rely on the ATR mode, that is automatic target recognition mode. So it simply gives the repetitive measurements with a good accuracy. So human error हटाने के लिए और fast measurement के लिए recommend the automatic total or motorized total. Okay. We have a couple of questions on auto height. One is auto height option available in TS07? And also we have another question which is asking can we install auto height facility in TS11 instrument? TS07 में जैसे मैंने आपको बताया it's an optional. Before order you have to ask the salesperson. TS10 में by default है auto height functionality. TS11 जैसे कि लाइका ने ऑटो हाइट फंक्शन लाया था FlexLine में ही, जैसे TS07 TS10 पे. TS11 is a earlier series, so there is no provision for the auto height in a TS11. So if somebody has purchased TS07, can they upgrade and get auto height in it? They can upgrade later, but they have to send the equipment to the service center. Mm-hmm. But on-site update and or on-site integration of the auto height is not possible. It has to be in a factory or in a service center. So this was the question from Mr. Chandrasekhara. I think the last question for the day is, which is the best model for traverse survey, open and close both, and what is the adjustment method? See, simply when we go for the traverse, we always go for the 1 second. Either is a TS07 1 second or TS10 1 second. बेटर ये होता है कि 07 और TS10 अगर डिफरेंशिएट होते हैं तो वो उसके फीचर्स और फंक्शनलिटी के हिसाब से. दोनों मैनुअल है, दोनों में ड्राइव सेम है, फोकस सेम है, मैनुअल फोकस सेम है, बट उसमें जो एडिशनल फीचर्स है TS10 में, जिसमें ट्रैवर्स प्रोग्राम है, ग्राफिक्स है, जिसके अंदर आपका 2D व्यू 3D ओवरव्यू है, स्टडीनेस है. सो 07 भी आप यूज कर सकते हो, और अगर आपको बेटर फीचर्स और बेटर फंक्शनलिटी चाहिए तो आप TS10 को भी यूज कर सकते हो. ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग ट्रैवर्स दोनों में अवेलेबल है, ऑनबोर्ड एडजस्टमेंट ट्रैवर्स दोनों में अवेलेबल है. यू कैन एडजस्ट दी ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स विद द कंपास रूल एंड ट्रांजिट रूल in both the GS07 and TS10. Thank you so much, Nitin, for taking all the questions. As Nitin mentioned, that if you have any more questions, please feel free to write to him. His email ID is currently on this slide. It is nitin.garg@hexagon.com. And as he already said that the number is also there on the screen, so you can WhatsApp him as well with your queries. With this, I think we conclude today's webinar. Please join me in thanking Nitin for this informative session. And also please note his number and contact details for further information. We'll also be sharing a recording of this session should you wish to listen back to this webinar. And we really appreciate your time and hope you have found this webinar to be a valuable experience. Thank you so much. Thank you so much. आप सबने you asked the question. I'm really thankful to you. And if there are any question, you can reach me. और जैसे कि प्रियंका ने बताया, we are always there to help you out. We are always there to guide you out. And any query, you are always welcome. Thank you so much. Thank you so much for that.